Okay, we was discussing about the how gastric acid is formed in the stomach. So gastric acid is formed by different pathways. First one is a neurogenic pathway, second one is a hormonal pathway, and third one is a local pathway. Hormonal pathway, local pathway, neuronal pathway. So whenever you will see the food, neuronal pathway will be activated, and your parasympathetic nervous system will be activated via vagus nerve. It will release the acetylcholine. Now, acetylcholine will act on a different cells present in the stomach. Stomach में different type के cell होते हैं. जैसे enterochromatin like cell known as a mast cell. ठीक है, ये mast cell होगा. Then gastrin containing cell और CCK cell. ये known as gastrin और D cell. इसको D cell भी बोलते हैं. Gastrin, okay. Gastrin means it is a hormone. It is a hormone. Okay. Then main secretory cell of stomach जो एसिड बनाता है उसको बोलेंगे पैराइटल सेल्स और इसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं. ओके, सो और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड मींस पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल. So there are three kind of cells in the stomach. So whenever you will see the food, eyes will transmit a impulse to brain will analyze it, and brain will signal to release the acid via vagus nerve. Acetylcholine will be released on the effector cell. Now acetylcholine has a positive effect on this gastrin gland. So it will increase the secretion of gastrin. Gastrin is hormone. It has a direct effect on parietal cell. Gastrin also has an effect on parietal cell. So whatever increase the amount of gastrin will act on a gastrin receptor and will increase the calcium permeability to the proton pump. This one is a proton pump. Okay, this one is a proton pump. So it will stimulate the proton pump to make available hydrogen ions. Then which hydrogen ion will combine with this chloride ion and then HCl will. This is one. Now acetylcholine again act on this enterochromatin like cells or mast cells, and it will stimulate the release of histamine, and gastrin also act on this cell to release the histamine. Now whatever histamine released will also have a receptor on parietal cell, so it will also stimulate the proton pump to release the hydrogen ion. Okay, and that hydrogen ion comes with the chlorine, and you will get a hydrochloric acid. Then again this acetylcholine, as I have told you, acetylcholine act on a three different way. Will act via its own receptor, okay, cholinergic receptor, that is known as a muscarinic receptor. So muscarinic receptor are also found on the parietal cells, M3 receptor. So it will again directly stimulate the proton pump. So that's how gastrin, this acetylcholine act via three different way. Okay, direct stimulation of proton pump, then stimulation of gastrin also, then stimulation of enterochromatin cell or mast cell to release the histamine. Okay, so this is the way acetylcholine will act. Now again you see this is the known as a neurogenic pathway. This is known as neurogenic pathway. Now see the hormonal pathway to release the acid. हार्मोनल पाथवे क्या है कि जो गैस्ट्रिन जो है आपका गैस्ट्रिन, सो आपका जो फूड है, सो स्टिमुलस ऑफ फूड, जैसे आपने फूड देख लिया, कोई खाना देख लिया या फिर कोई खाना को आपने स्मेल किया, hormonal pathway will be activated and there will be direct release of gastrin. You know that gastrin has its own receptor. It will stimulate the proton pump of parietal cell. Gastrin will also has a stimulant action on enterochromatin cell to release the histamine. So ultimately it will release the acid. Okay? This is known as a hormonal pathway. Now what happens in the parietal cell? Okay, what happens in the parietal cell? Stimulus from histamine or stimulus from this acetylcholine, histamine और stimulus from gastrin, ये तीनों stimulus क्या करेंगे? Okay, that will stimulate the proton pump. That will stimulate the proton pump. Proton pump is known as a sodium. Proton pump is known as a potassium hydrogen ATPase. Proton pump is nothing but the potassium hydrogen ATPase exchange pump. So it will make available. Okay, potassium will be exchanged with the हाइड्रोजन. ठीक है, देखो यहाँ पे पोटेशियम बाहर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाएगा H+. So what is the role of this proton pump? To make a hydrogen ion available, so that the hydrogen ion will combine with the chloride ion and there is formation of HCl. Okay, so final pathway for acid formation is nothing but the proton pump, or it is also known as a hydrogen potassium ATPase pump. So that is the final pathway. So all histamine, then your gastrin, then your acetylcholine, all these will stimulate the proton pump to release the hydrogen ion. Okay,
Now you will have one doubt how there is a generation of hydrogen ion. ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है एक्सचेंज करने के लिए? तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है मैं बोलता हूँ. ओके, आपके स्टमक में क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है. सो वाटर इज देयर इन योर स्टमक. सो कार्बोनिक अनहाइड्रेस enzyme will break down this water and convert it into carbonic acid. Okay, H2CO3, that is known as a carbonic acid. So carbonic anhydrase will convert water into carbonic acid and H plus ion. And this H plus ion is taken up by this proton pump and exchanged with the potassium ion, so that your parietal cell will have a hydrogen ion. That hydrogen ion will combines with this chloride ion, which is also from your blood. Okay, and you will get HCl, and HCl will be secreted. So that's how the acid formation takes place in the stomach. Now again you can see over here vagus stimulation. Whenever you will see the food, vagus stimulation will be there, and there will be release of acetylcholine. Acetylcholine. Now acetylcholine act on three different cells. First one is known as a gastrin. Okay, it will act on a G cell containing gastrin and stimulate the release of gastrin. Gastrin is known as a digestive हार्मोन. गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन को रिलीज कर देगा. गैस्ट्रिन ब्लड में आ जाएगा. गैस्ट्रिन ब्लड में आ जाएगा और वो डायरेक्टली उसके रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होगा. डायरेक्टली भी उसके रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होता है और उसमें इंटरक्रोमेटिन सेल्स और मास्ट सेल जो होते हैं, सो उसके ऊपर भी एक्ट होता है. नाउ एसिटिलकोलिन एक्ट्स ऑन दिस गैस्ट्रिन. अगेन एसिटिलकोलिन एक्ट ऑन अ सेकंड सेल नोन एज अ डी सेल कंटेनिंग सोमेटोस्टैटिन. इसके ऊपर भी एक्ट होता है. इसको भी पॉजिटिव, इसको भी मतलब इसका भी सिक्रेशन बढ़ता है. सो एसिटिलकोलिन विल इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन सोमेटोस्टैटिन. देन एसिटिलकोलिन आल्सो डायरेक्टली एक्ट ऑन अ इंटरक्रोमेटिन सेल containing histamine to release the histamine. Histamine release करेगा. And acetylcholine will also act on this directly on proton pump. Proton pump के ऊपर directly मतलब parietal cells जो होता है उसके ऊपर भी act करता है. So by M3 receptor. Then histamine will act on a H2 receptor. Gastrin will act on a CCK, the gastrin receptor, to increase the hydrogen ion on a proton pump. जैसे hydrogen ion increase हो जाएगा, so that hydrogen ion can be combined with the chloride ion to form a HCl. Okay, this is how pathway is there. Formation of gastric acid. Now, what are the different ways to block the formation of gastric acid? आपको मालूम है कि गैस्ट्रिक एसिड कैसे फॉर्म हो रहा है, तो कैसे बनने नहीं देना है आपको वो भी टारगेट्स मालूम है. सो ड्रग यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर. सो व्हाट आर द डिफरेंट टारगेट्स? सो यू नो दैट there is a role of acetylcholine, there is a role of somatostatin, there is a role of your gastrin, there is a role of your uh, there is a role of your histamine to receptor histamine, there is a role of your proton pump. So obviously all these are nothing but the targets for anti-ulcer. So one more thing over here. So remember, gastric mucosa, prostaglandin will have a protective role in the gastric. So prostaglandin will prevent the gastric acid. ये बाकी जो है अपने लास्ट इसमें देखा है. So जैसे आपका choline, acetylcholine, then histamine, then gastrin, all these stimulate the acid formation. Okay, acid formation, stimulate the acid formation. But prostaglandin will have negative effect on the acid formation. Prostaglandin क्या है? Negative effect करता है. It will have a negative effect on the acid formation. So prostaglandin prevent the acid formation and increases the secretion of bicarbonate ion, okay, on the stomach, so that it has a protective role. Now, what are the targets for peptic ulcer? Drug used in the peptic ulcer. So obviously, you know that जो muscarinic receptor है, acetylcholine का muscarinic receptor has a positive action on proton pump. It will stimulate the proton pump to release the hydrogen ion, so that acid will be generated. Again, then histamine also has a this histamine will also stimulate the proton pump to increase the acid. Then gastrin also stimulate the proton pump to generate the acid. Okay, so you can block the acetylcholine by using muscarinic antagonist. So muscarinic antagonist एक class हो गया. दूसरा है you can block the histamine receptor and prevent the acid generation. So histamine 2 receptor antagonist. थर्ड क्लास है आपका यहाँ पे गैस्ट्रिन, तो जो हार्मोन है गैस्ट्रिन को ब्लॉक करो, गैस्ट्रिन रिसेप्टर सोमेटोस्टैटिन. यू नो दैट दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका. तो ये क्या करेंगे? एसिड बनने नहीं देंगे. तो इसके एनालॉग है उसको. सो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग लाइक मिसोप्रोस्टा. सो दैट्स हाउ यू कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एसिड. अभी
जो एसिड बन चुका है ऑलरेडी. So whatever acid is already formed, so you cannot prevent if you cannot prevent the formation of acid, so then neutralize whatever acid is formed. So you can neutralize the acid by antacids. एक तो क्या करो कि इसको बनने ही मत दो, एसिड को बनने ही मत दो. क्यों बनने मत दो? क्योंकि आपको क्या हो गया है कि अल्सर हो गया है पेट में, आपको जख्म हो गया है पेट में या फिर डिओडेनम में. ठीक है, नॉर्मली एसिड तो बनना चाहिए. अगर एसिड नहीं बनेगा तो आपका डाइजेशन नहीं होगा. So if there is no formation of acid in the stomach, so there will be no digestion, and you will not get any nutrient and all that. This is a physiology. It is a normal process. Acid formation in the stomach is a normal process. But what happens if there is a excessive generation of acid? Then there is a that is known as a hyperacidity. If there is excessive generation of acid in the stomach, known as a hyperacidity, and hyperacidity is one of the cause for ulcers in the peptic duodenum as well as stomach. If ulcer is in the stomach, known as a peptic ulcer. If ulcer is in duodenum, is known as a duodenal ulcer. There are different reasons for ulcer. Okay, so just remember. So if first you have to prevent the excessive formation of acid, or in presence of ulcer you can prevent the formation of acid. All these drugs are known as a anti-secretory agent. This anti-muscarinic, then this histamine 2 receptor blockers, then proton pump inhibitors. Proton pump जो है उसको ही inhibit करो directly. तो अगर इसको इनिबिट नहीं कर सकते आप, मस्करिन एसिटिलकोलिन को, हिस्टामाइन को, गैस्ट्रिन को, तो डायरेक्टली प्रोटॉन पंप को ही आप इनिबिट करो. सो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स. सो ऑल दीज आर नोन एज एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स. तो ये सीक्रेट नहीं होने देंगे एसिड को. अगर एसिड सीक्रेट नहीं होने देंगे, अगर ऑलरेडी जो फॉर्म्ड एसिड है उसको क्या कर सकते हो, या फिर अगर आप सीक्रेट होने से नहीं बचा पाए तो यूज एंटासिड्स. मीन्स दीज आर द ड्रग व्हिच विल न्यूट्रलाइज द ऑलरेडी फॉर्म्ड एसिड. ये न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को. सो दैट्स हाउ these are the targets: acetylcholine, gastrin, histamine, proton pump. Okay, that your gastrin is also known as somatostatin, then prostaglandin analogs. So these are known as anti-secretory agents. So antacid will chemically react with the acid and neutralize it. Okay, then proton pump inhibitors, anti-muscarinic, histamine receptor blocker, somatostatin analog. This will prevent the formation of acid. That's why they are known as anti-secretory agents. Antacids are they will neutralize the acid by chemically. Okay? And now whatever ulcer is formed, जो अल्सर बन चुका है ऑलरेडी, तो क्या कर सकते हैं, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो. सो यू कैन प्रिवेंट द डेवलपिंग द अल्सर. जो अल्सर बना है उसको प्रोटेक्ट करो. सो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड. फॉर एग्जांपल सुक्रालपेट. सुक्रालपेट is also protective drug. Proton pump inhibitor, histamine receptor blocker, anti-muscarinic. So these drugs will prevent the formation of acid in the stomach. Okay? And misoprostol is a will form a misoprostol is a prostaglandin analog and will increase the physical barrier by increasing the mucus and bicarbonate ion secretion. So these are the targets for anti-ulcer drugs. Now we'll see the drugs individually. So pharmacotherapy of peptic ulcers. Pharmacotherapy of peptic ulcer. So what do you mean by peptic ulcer? Peptic ulcer is a common it is a common term for GIT ulceration. आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई अल्सर बन गया या फिर कोई वो वहाँ पे जख्म बन गया, if there is a wound formation in the stomach or duodenum. So peptic ulcer is a common term for GIT. Different type of ulcers are there. For example, duodenal ulcer. Duodenal ulcer means wound or ulcer in the duodenum. Then gastric ulcer. Gastric ulcer means ulcer in the stomach. Okay. Then next one is a stress induced ulcer. अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो तो उसकी वजह से भी अल्सर बनता है. तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर एंड NSAID induced ulcer. NSAID induced ulcer. Non-steroidal anti-inflammatory drug induced ulcer. So if you use chronically, अगर आपने बहुत मतलब 6 महीने 7 महीने तक आपने 3 महीने 4 महीने से साथ में आपने NSAID ड्रग लिया या फिर कोई स्टेरॉइडल ड्रग लिया, so steroidal drug, NSAID induced drug. So chronic use of steroids and chronic use of non-steroidal anti-inflammatory drug, they will also induce the ulcer. They will also produce the ulcer because these drug causes hyperacidity. So there are different type of ulcer like duodenal ulcer, peptic ulcer or gastric ulcer, stress induced ulcer, NSAID induced ulcer. Now what is the reason for ulcer? Reason for ulcer.
So reason for ulcers is nothing but the excessive production of acid. So production and continuous contact of your cell or continuous contact of your stomach or duodenal cell with the hydrochloric acid. Okay. So production and continuous contact with the hydrochloric acid. Okay, that is the first reason. And second reason is the uh, continuous production of acid and pepsin. That is the first reason. Second reason is the H. pylori infection. Okay, so H. pylori infection in the stomach and duodenum. आपका जो स्टमक है और डिओडेनम है उसमें एक बैक्टीरिया है H. pylori, इटेरोबैक्टर पाइलोरी, उसको बोलते हैं H. pylori. Infection of H. pylori is also responsible for the acid, responsible for the duodenal ulcer. So most of the duodenal ulcer is because of this H. pylori. इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा तो H. pylori को इरेडिकेट करने के लिए. You can prevent the formation of acid, okay, by using different antiseptic reagent. You can neutralize the acid whatever is already formed by giving chemical antacids, or you can eradicate this H. pylori infection which is responsible for the infection by using various kind of antibiotic. Or another way is that you can protect the ulcer whatever is already formed. जो अल्सर ऑलरेडी बन चुका है उसको प्रोटेक्ट करो बाय using ulcer protective drugs like sucralfate. Okay, so these are the different ways to prevent the gastric ulcer duodenal ulcer. Now H. pylori is the bacteria. So आप बोलेंगे सर स्टमक में तो एसिड होता है आपके तो बैक्टीरिया तो वहां पे मर जाएगा तो ये कैसे जिंदा रहता है तो absolutely true. Most of the bacteria they dies in the stomach, okay, because of the acid environment in the stomach. जो एसिड होता है आपके स्टमक में उसमें बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाते हैं. But how this H. pylori will survive in the gastric acid medium? So this H. pylori can survive in the acid environment because this H. pylori secrete one enzyme. ये एक एंजाइम बनाता है उसका नाम है यूरिएज. So H. pylori will survive in the gastric environment of stomach because it secrete one enzyme known as urease. उसका काम क्या है यूरेज का? So this enzyme hydrolyzes यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. ये यूरियस नाम का एंजाइम जो है H. pylori सिक्रीट करता है. ये क्या करेगा जो यूरिया होता है ब्लड में या फिर वहाँ पे जो जीआईटी के वहाँ पे यूरिया जो होता है उसको क्या करेगा ब्रेक डाउन करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. नाउ यू नो दैट दिस अमोनिया इज नथिंग बट द अमोनिया क्या होता है बेसिक इन नेचर होता है. अमोनिया इज द बेसिक इन नेचर. दैट्स व्हाई ammonia is the basic in nature and that helps to survive the bacteria in the acid environment. ये बेसिक है आपका एनवायरनमेंट ऐसे है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. So ammonia promote the survival of this H. pylori in the acid environment and H. pylori continuously causes gastritis. Gastritis means inflammation of gastric mucosa. The majority of ulcer is because of the H. pylori infection. तो अल्सर के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो गया जैसे स्ट्रेस हो गया. कंटिन्यूसली अगर स्ट्रेस ले रहे हो उसमें भी एसिडिटी होता है जैसे H. pylori infection and chronic use of NSAIDs, chronic use of steroidal drug. Okay, so all these are the और एनी इंजुरी अगर आपने कुछ खाया है इंजुरी हो गया किसी का पेट में अगर इंजुरी हो गया तो वजह से भी आपको अल्सर हो सकता है. So these are the different type of ulcers. So introduction to ulcer. Now gastric acid secretion we have seen that gastric juice is made up of a different mixture. Gastric juice is made up of hydrochloric acid, then pepsin. Pepsin is nothing but the proteolytic enzyme. Then renin is also a proteolytic enzyme. But this renin is only found in the children. दूध पीते बच्चे होता है छोटी बच्ची हो गया वैसे दूध पीते बच्चे जो होते हैं उसमें रेनिन होता है because renin is the proteolytic enzyme which can digest the casein from milk. केसिन मतलब मिल्क में जो केसिन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन लगता है. नॉर्मल बाकी प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन कीमोट्रिप्सिन लगता है. तो गैस्ट्रिक जूस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन रेनिन देन नेचुरल क्लोराइड देन म्यूकोस देन intrinsic factor is responsible for the absorption of vitamin B12. So it is also again a protein glycoprotein. गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है पेप्सिन होता है एसिल होता है रेनिन होता है. रेनिन से बच्चों में होता है नेचुरल क्लोराइड होता है म्यूकोस होता है इंट्रिंसिक फैक्टर होता है. इंट्रिंसिक फैक्टर इज नथिंग बट द ए ग्लाइकोप्रोटीन रिस्पांसिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ट्रेसेस ऑफ अमोनियम पोटेशियम एंड कैल्शियम.
सो दैट इज द कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ये सब गैस्ट्रिक एसिड में वो रहेगा. फैक्टर्स लाइक parietal cell mass, then emotional factors, digestive state, affect the hormonal status, the presence of extrinsic stimulus, extrinsic chemical, affect the gastric acid secretion. तो यहाँ पे mass of parietal cell, तो आपका स्टमक में parietal cell का नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, parietal cell का मास कितना है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिड बनेगा. इमोशनल फैक्टर, अगर आपको कंटिन्यूसली आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपका एसिड ज्यादा बनेगा. डाइजेस्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन, हार्मोनल स्टेटस ऑफ द पर्सन, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक केमिकल जैसे ड्रग्स हो गए, that affect the gastric acid. The stomach has a different kind of cell. First one is a parietal cell or oxyntic cell which will secrete the hydrochloric acid on the stimulus. जैसे उसको स्टिमुलस मिल जाएगा, जैसे इसको parietal cell को स्टिमुलस मिल जाएगा वो एसिड बनाएगा. कौन देगा स्टिमुलस, स्टिमुलस के डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज होते हैं. फर्स्ट वन इज अ neuroprime pathway. We have seen in the diagram. Neuroprime pathway is under the influence of acetylcholine hormone receptor in the stomach. Is a neuroprime pathway. Then endocrine pathway, which is under the influence of gastrin hormone. हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, उसके अंडर में गैस्ट्रिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एंडोक्राइन पाथवे होता है. थर्ड pathway is nothing but the pancreatic pathway. Third pathway is nothing but the pancreatic pathway. There is a proton pump, that is a hydrogen potassium ATPase pump. Parietal cell or oxyntic cell of stomach will secrete the acid on the stimulus of these three. That is neurocrine pathway because of the vagus nerve or acetylcholine. Then endocrine pathway because of that gastrin hormone. Then pancreatic pathway because of that proton pump. Okay, so it will secrete the acid by these pathway. Now gastric mucosa also consists of pancreatic cells. Gastric mucosa also consists of pancreatic cell containing somatostatin. सोमेटोस्टैटिन नाम का हार्मोन भी होता है इसमें, which inhibit the acid secretion. तो सोमेटोस्टैटिन क्या करेगा, एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा. तो एसिड सिक्रेशन को प्रमोट करने वाले फैक्टर कौन से है, ये यहाँ पे देखो, हिस्टामाइन है, आपका एसिटिलकोलिन है और आपका प्रोटॉन पंप है. ठीक है, प्रोटॉन पंप, एसिटिलकोलिन, हिस्टामाइन. ठीक है, करेंगे प्रमोट करेंगे एसिड को इनहिबिट, एसिड फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे. सो दोज फैक्टर व्हिच विल not promote or which will prevent the acid formation. So first one is a somatostatin. Okay, somatostatin. Then again there is a another one known as a prostaglandin. So prostaglandin and somatostatin will prevent the acid formation, and this acetylcholine, histamine will increase the acid formation. So histamine and serotonin, they are the promoters of acid secretion. So somatostatin is the inhibitor of acid secretion. Yes, histamine, serotonin are the promoter of. Acetylcholine also stimulate the parietal cells to release the acid and reduces the level of somatostatin. Prostaglandin produced by the cells in the GIT has a inhibitory effect on the gastric acid secretion. The pyloric gland also secrete the gastrin, acid release promoter. Gastrin जो है वो acid release को promote करेगा. So promoter कौन से है और inhibitor, मतलब promoter कौन से है और supporters कौन से है और non supporters कौन से है. सो सपोर्टर्स में आता है आपका एसिटिलकोलिन, आपका हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, आपका वहाँ पे गैस्ट्रिन भी सपोर्टर है. ठीक है, सो देन प्रोटॉन पंप. सो रिमेंबर दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड. एसिटिलकोलिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, गैस्ट्रिन, देन प्रोटॉन पंप. दे विल प्रमोट द formation of acid. Now who will not promote the formation of acid? Somatostatin and prostaglandin. So somatostatin and prostaglandin, they have protective role in the ulcer. Okay? They will prevent the acid formation. यहाँ पे ये याद रखो. That's why somatostatin analog, they are also used in the hyperacidity. Prostaglandin analog, they are also used in the hyperacidity. So now we'll see the classification of drug used in the ulcer therapy. First one is the first class will be your antacids. First class will be your antacid. In that also you have two subtypes. First one is known as systemic. First one is known as non-systemic antacid, and second one is known as systemic antacid. Non-systemic मतलब क्या? Non-systemic antacids, they will not get absorbed in the blood. Okay, from the stomach. So ये antacid वो आपके stomach में जाके neutralize करेंगे एसिड को और वहाँ से ही excrete हो जाएंगे. ठीक है, वो एब्सॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में, ब्लड में. सिस्टमिक एंटासिड क्या होता है कि ये न्यूट्रलाइज तो करते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, बॉडी में एब्सॉर्ब होते हैं. सो सिस्टमिक एंटासिड इज दोस व्हिच गेट एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी.
as a systemic antacid. Non-systemic antacid means that is not absorbed in the body. So what are the examples of systemic antacid and non-systemic antacid? You can see over here. Systemic antacid means what? Systemic antacid means they are absorbed in the body. Okay. Example is sodium bicarbonate. Okay. Example is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is the example. Are you antacids classification of your drug used in the ulcer or anti-ulcer drug? So first one is a non-systemic. They will not get absorbed. They will only neutralize and will get excreted. So aluminum hydroxide gel, magnesium trisilicate, then calcium carbonate, magnesium hydroxide. All these are the non-systemic. Systemic antacids में आता है आपका sodium bicarbonate. It will get absorbed in the body and it will produce the alkalosis, systemic alkalosis as well as urinary alkalosis. Now second class is nothing but the anti-secretory agent. Anti-secretory agent. ये क्या करेंगे? Acid को formation होने नहीं देंगे. So they will prevent the formation of acid. In that you have different classes. First one is the histamine 2 receptor blockers or histamine 2 receptor antagonist. Example is cimetidine, ranitidine, famotidine, nizatidine, roxatidine. All the deans, they are the histamine 2 receptor blockers. Then in that also, and in anti-secretory second class is proton pump inhibitors. So azoles, omeprazole, rabeprazole, lansoprazole, pantoprazole, esomeprazole, dexamethasone. All these are the derivatives of this. All these are the proton pump inhibitor. Now again in the anti-secretory class C, anti-muscarinic drug. Okay, for example, olanzapine, propanthalin, non-selective muscarinic blockers they are used. Okay, olanzapine, propanthalin, atropine, etc. etc. Non-selective muscarinic blocker. Then in the anti-secretory you have another subclass known as a prostaglandin analog. Prostaglandin analog. Okay, so prostaglandin analog. So misoprostol, N-prostil. So they will prevent the acid secretion. They will promote the formation of mucus layer and bicarbonate ions. Okay, prostaglandin analog. Somatostatin analog is also there. Okay, known as the octreotide. Next class is known as ulcer protective drugs. Ulcer protective drugs. In that you have bismuth salts and sucralfate. Okay. Then next next fourth class will be your antibiotics or antibacterial agent to kill the or to eradicate the H. pylori infection if there. Okay. So in that you have tetracyclines, amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, and tinidazole, metronidazole, tinidazole. So these are the anti-protozoal agents, metro and tini. These are the anti-protozoal, but amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, these are the antibiotics. Remember the classification again. Antacids में दो आता है, systemic, non-systemic. Anti-secretory में आता है आपका सब classes like histamine blocker, proton pump inhibitors, anti-muscarinic, prostaglandin analog, then okay, then somatostatin analog में आता है आपका octreotide. The next class is ulcer protective में bismuth salt sulfate, anti-ulcer, anti-H. pylori infection के लिए antibiotics, उसमें clarithromycin, amoxicillin, tetracycline, and that's the classification. Now we'll see the properties of individual drug. Okay, properties of individual drug. So first one is a aluminum hydroxide gel. So it is known as a non-systemic antacid. Okay. So what will it do? It will neutralize the acid. It will neutralize the acid. Neutralization of acid. So mechanism क्या है उसका? Neutralization of acid. Water, it will neutralize the acid and it will form water insoluble and unabsorbable byproduct. Okay, and therefore it will not cause systemic alkalosis or acidosis. It will not cause systemic acidosis or alkalosis. ये जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन के बाद में वो एब्सॉर्ब नहीं होता है ब्लड में सिस्टमिकली एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट कॉज एनी systemic alkalosis or acidosis. It will get excreted. Okay. इसका एक साइड इफेक्ट रहता है स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट. तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम आयंस सो दे कॉजेस कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको मालूम होगा कॉन्स्टिपेशन नॉट एबल टू पास योर बाउल, दैट इज अ कॉन्स्टिपेशन. सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हैज अ adverse effect of constipation, therefore okay it has a adverse effect of constipation. There
ये बाद में देखेंगे व्हाई इट्स कंबाइंड विद द मैग्नीशियम ट्राइसल्फेट काउंटरएक्ट दिस। यहाँ पे स्पेसिफिक यूज क्या है उसका, नॉन सिस्टमिक एंटासिड एंड प्रोटेक्टिव। ओके, एडवर्स इफेक्ट में और एक आता है ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी एंड एन्सेफेलोपैथी। इट विल प्रिवेंट द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द स्टमक। ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसका एब्सॉर्प्शन, कैल्शियम का। दैट्स व्हाई ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी एंड एन्सेफेलोपैथी। ओके, एंड आल्सो इट प्रिवेंट द also prevent the absorption of vitamin B12। तो इसमें और एक एडवर्स इफेक्ट है कि विटामिन B12 का भी एब्सॉर्प्शन नहीं होने देगा ये। नेक्स्ट इज अ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। मैकेनिज्म क्या है, अगेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड न्यूट्रलाइजेशन इज स्लो ऑनसेट बट प्रोलॉन्ग। ज़्यादा देर तक ये न्यूट्रलाइज करते रहेगा एसिड को। इसका एडवर्स इफेक्ट है माइल्ड डायरिया। So magnesium trisilicate or magnesium ion causes diarrhea, okay, and aluminum ions causes constipation. That's why these two are combined. These two are combined. Magnesium trisilicate and aluminum hydroxide gel, they are combined together to counteract the adverse effect of each other. Magnesium trisilicate का adverse effect है diarrhea और इसका aluminum hydroxide gel का है constipation। दोनों को साथ में दे दो तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट क्या करेगा, जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो रिलीव करेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो डायरिया हो रहा है वो रिलीव करेगा। इट इज used as a non systemic antacid। When it is combined with the aluminum hydroxide gel, diarrhea caused by magnesium trisilate can be counteracted. Because of this magnesium ion, it causes CNS depression due to small amount of magnesium absorption, also cause renal impairment। magnesium का और absorption हो जाएगा। So this is a, now next one is a magnesium oxide and magnesium hydroxide। Magnesium oxide and magnesium hydroxide. So combine these two together, they are known as the milk of magnesium। Again the mechanism is a neutralization of acid। तो ये भी neutralize कर देगा acid को। Quick acting antacid, it is a quick acting antacid, it will neutralize the acid and again it has a prolonged action। Magnesium hydroxide generated and excreted in the feces। So after reacting with the gastric acid, magnesium hydroxide is generated in the feces। Now what is the specific effect, specific side effect? So again it has a magnesium ion, so you can say it causes diarrhea। It is also used as a non-systemic। We'll see the next. Again next one is a calcium carbonate। Next one is a calcium carbonate। So mechanism क्या है, again it will neutralize the acid, neutralization of acid, react with the acid to form a calcium chloride, and in the intestine calcium chloride react with the bicarbonate to generate calcium by calcium carbonate, which is excreted in the feces। It has a high neutralizing capacity। तो उसका एक जो एंटासिड होते हैं उनका एक प्रॉपर्टी होता है न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी। यू माइट हैव सीन इन द योर inorganic chemistry। So acid capacity, neutralizing capacity, it has a high neutralizing capacity। What is the adverse effect? Again it will cause constipation। It will cause constipation which can be counteracted by with increase in the serum gastrin level। It causes increase in the serum gastrin level। तो इसका serum gastrin level करेगा। prolonged therapy result in the hypercalcemia। prolonged अगर long term यूज करेंगे तो उसको क्या होगा, hypercalcemia, calcium level का बढ़ जाएगा। So again used as a non-systemic antacid। Next one is a sodium bicarbonate। Next one is sodium bicarbonate। So it will also neutralize the acid, neutralization of gastric acid, and it will form a sodium chloride after neutralization। Okay, sodium bicarbonate and HCl will react together to form a sodium chloride। Okay, action is very rapid। It action is effective and rapidly acting antacid। It is a systemic antacid। It is absorbed in the blood circulation, causes systemic alkalosis and also causes systemic urinary alkalosis। pH बढ़ देगा आपके ब्लड का। सिस्टमिक अल्कोलोसिस मतलब क्या, ये आपका ब्लड का pH जो है 7.4 होता है नॉर्मली, तो वो बढ़ा देगा, 8 कर देगा, 9 कर देगा। तो दैट इज नोन एज सिस्टमिक अल्कोलोसिस। also causes because of this reaction sodium bicarbonate and HCl का जो रिएक्शन होता है, because of the reaction, neutralization reaction, there is generation of carbon dioxide। okay, and which will cause distension of abdomen। तो पेट फूल जाएगा आपका, ठीक है। flatulence due to release of carbon dioxide known as a abdominal discomfort। तो ये flatulence करेगा आपको ड्यू टू जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्शन। तो एसिड के साथ में रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है एंड दैट कॉज abdominal distension। Esophageal reflux and sodium retention, these are also adverse effects।
Another adverse effect is there known as a another adverse effect is there known as a rebound acidity. आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि इनो, आपने बहुत सारे लोगों ने इनो का यूज किया होगा। इनो, इनो बुलबुले, ठीक है, इनो बुलबुले जो होता है तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ही रहता है। ओके, सो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे ही आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वहां पे वो डकार आते हैं। तो इनो बुलबुले लेने के बाद वो एडवर्टाइज में दिखाते हैं ना, से डकार लेता है वो। सो because of the neutralization of acid by sodium bicarbonate, there is generation of carbon dioxide, and which will cause flatulence and distension of your stomach. Okay? And remember one thing: sodium bicarbonate, if used as an antacid, it causes rebound acidity. मतलब आपका एसिड इमीडिएटली तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बट उसके बाद में ज्यादा एसिड फॉर्म हो, इज नोन एज रिबाउंड एसिडिटी। सो इनो बुलबुले causes rebound acidity. It is used as a systemic antacid and used for the metabolic acidosis. अगर metabolic acidosis हो गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो pH, and it is also used for the alkalization of urine. So alkalization of urine helps in the removal of acidic drug. In very first lecture we have seen acidification of urine helps in the removal of acidic drug. Okay? Next one is a cimetidine. Next one is a cimetidine. Cimetidine is known as a histamine 2 receptor blocker. Cimetidine. Cimetidine क्या है? Histamine 2 receptor blocker. Histamine 2 receptor blocker है cimetidine. ठीक है, इसको एक बार सेव कर लेता हूँ मैं रिकॉर्डिंग। Are you getting or not? समझ रहा है?